एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन क्लियर लाइट ऑफ डे, रिटन बाय अनीता देसाई। अनीता Desai's Clear Light of Day is dominated by sound. The novel begins with the quails singing. The quails begin to call before daylight. Their voices rang out from the dark trees like an arrangement of bells, calling and echoing each other's calls, mocking and enticing means attracting each other into ever higher and shriller calls, more and more joined in as the sun rose. Interestingly, the novel also ends with Mulk's guru singing the poetry of Iqbal. Desai uses Anita Desai uses music to foreground the theme of the novel. Sayyid Imanuddin notes that between the singing of the koel and the musical rendering of Iqbal's poetry, we have the we have the scratches and squeaks of old records. These scratches and squeaks are the tensions and problems of a nation breaking up, a family getting fragmented. The partition brought barriers between people who had lived together for centuries in an atmosphere of mutual social and cultural understanding. इसको हम थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं। क्लियर लाइट ऑफ डे में साउंड की काफ़ी डोमिनेंस है। साउंड कई तरह के हैं, जैसे कोयल का साउंड हो गया, ग्रामोफोन का साउंड हो गया, उसके बाद पोइट्री जो बोलते हैं या सिंगिंग है उसका साउंड हो गया। तो इस तरह से साउंड्स बताए हैं इसमें, और साउंड को हर करेक्टर के साथ लिंक किया गया है इस नॉवल में, ऑलमोस्ट विद एवरी करेक्टर। तो इसमें नॉवल जो है वो शुरुआत ही कोयल के सिंगिंग से होती है। उसके बाद पोइट्री, इकबाल की पोइट्री है जो कि मुल्क जो एक नेबर है ना इनके मिश्रास है ना, मुल्क मिश्रा, उनके सिंगिंग से शुरुआत, उसके बाद वो उनकी सिंगिंग स्टार्ट हो जाती है। इकबाल की पोइट्री वो पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा इसमें बता रखा है। द पार्टीशन ब्रॉड बैरियर्स, अब पार्टीशन की भी बात की गई है और ओल्ड रिकॉर्ड्स की बात की गई है। और ओल्ड रिकॉर्ड्स एंड जो पोइट्री बोली जाती है इनके द्वारा ना, मिश्रा ब्रदर्स के द्वारा जो पोइट्री बोली जाती है या सिंगिंग की जाती है मुल्क मिश्रा के द्वारा, उनके बीच में रिकॉर्ड्स और मुल्क मिश्रा की सिंगिंग के बीच में कुछ स्क्रैचेस एंड स्क्विक्स आते हैं, जैसे घर की आवाज़ें या इस तरह से आवाज़ें आती हैं ना स्क्रैच होने की, वो टेंशन बताती हैं। वो किसके बीच में टेंशन बताती हैं, जैसे कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उससे पहले और इंडिपेंडेंस के बाद की बताती हैं, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद की स्क्रैचेस एंड स्क्विक्स बताती हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसके बीच में वो सब बता रही हैं। द पार्टीशन ब्रॉट बैरियर्स बिटवीन पीपल हु हैड लिव्ड टुगेदर फॉर सेंचुरी इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल सोशल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। इससे पहले लोग इकट्ठे रहते थे, ठीक है, तो लेकिन बीच में क्या हो गया, दंगे हो गए, पार्टीशन हो गया, तो वो म्यूज़िक के स्क्रैचेस एंड स्क्विक्स बता रहे हैं। द डिवीज़न इनटू टू individual units causes each group a crisis of identity, because there is a forced uprooting and deviation from the fundamental principles of the common Indian culture that had prevailed over the century, where individual units had followed their diverse ways of living, remaining one whole entity. उसके बाद भी वो अच्छे से रहने लगे और आज़ादी से पहले भी वो बहुत अच्छे से रहते थे। In a similar manner, Tara, Bhim and Raja also face a crisis of relating their present to the past, their adulthood to childhood. Childhood में they were happy, इतने खुश नहीं थे लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ जी रहे थे। उसके बाद जब पार्टीशन का टाइम आया तो उनकी फैमिली भी, क्योंकि इसको पॉलिटिकल डायमेंशंस दिए हैं इस नॉवल को, तो जब पार्टीशन हुआ तो जैसे कि इंडिया में अभी दंगे हुए, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, वैसे ही इस फैमिली में भी जब राजा हैदराबाद चला गया, पेरेंट्स की डेथ हो गई,
तारा अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड चली गई, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब अपने अपने सब सेटल हो गए तो उसके बाद प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो गई। इन्होंने इसमें ये बताया है, द पीरियड दैट लाइज इन बिटवीन द ग्रोइंग कॉन्शियसनेस एंड सर्च फॉर इंडिविजुअलिटी ऑफ एडोलिसेंस। तो ग्रोइंग कॉन्शियसनेस मीन्स चाइल्डहुड एंड सर्च फॉर इंडिविजुअलिटी ऑफ एडल्टहुड, एडोलिसेंस मतलब जब वो अपने जगह पे सेटल हो गए थे। ठीक है, द पीरियड दैट लाइज इन बिटवीन fails to provide a continuity from the early period of childhood to the later stage of adulthood, causing deep psychological trauma and stress. Okay, ये बता रहे हैं कि जो टाइम बीच में था ना, जैसे पार्टीशन का टाइम बोलो या उनकी फैमिली का टाइम बोलो, जब वो लोग बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे, तो उनको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, स्ट्रेस आया था बीच में, उसकी बात ये कर रहे हैं। म्यूजिक बिकम्स अ पेनिशिया, पेनिशिया मीन्स क्योर, म्यूजिक बिकम अ क्योर फॉर डीपर डिस्टर्बेंसेस इन द नॉवल। ये बताया गया है कि म्यूज़िक ने एक क्योर है एक तरह से इस नॉवल में। ठीक है, उनकी डिस्टर्बेंसेस के लिए, जब भी वैसे भी आदमी जब परेशान होता है ना, तो थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनता है तो उसकी परेशानी थोड़ी कम हो जाती है। Most of the characters in Clear Light of Day are associated with music in some way or the other. It depicts their emotional strains. Because of the psychological nature of a novel, Desai often uses music to project thoughts, emotions, feelings in her characters. Baba, the autistic character in the novel, is described through music. Music के through उसको describe किया गया है. He is introduced through music for the म्यूज़िक ऑफ द 40s, इवोकिंग द पीरियड इन विच द नॉवल इज सेट। अब देखो ना, 90 ये 40s का म्यूज़िक वो चलाता है। इट मीन्स कि वो, इसमें एक ये चीज़ भी बताई गई है कि वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है और वो ग्रो प्रॉपर नहीं कर पाया है। मीन्स वैसे तो ओल्ड हो रहा है लेकिन वो मेंटली वो ग्रो नहीं हुआ है, तो वो 40s का म्यूज़िक ही सुनता है। मतलब वो बाद के मॉडर्न म्यूज़िक नहीं सुनता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसकी म्यूज़िक की समझ जो है वो बढ़ती नहीं है, वो 40s का म्यूज़िक ही सुनता है। इस चीज़ को इसके साथ भी कनेक्ट किया गया है। ठीक है, म्यूज़िक को उसकी एज के साथ भी कनेक्ट किया गया है। द नंबर्स ही प्लेज आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि स्मोक गेट्स इन योर आईज एंड डोंट फेंस मी इन, इस तरह के सॉन्ग्स वो सुनता है। द पॉइंट टू अ ट्रैप दैट ही इज़ एनमेश्ड इन ड्यू टू हिज डिसेबिलिटी है ना, उसमें ऑटिस्टिक चाइल्ड है तो वो ट्रैप हो गया उसी चीज़ में, उतने ही सॉन्ग्स में वो ट्रैप्ड है। सैयद अमानुद्दीन सेज, ब्लंट नीडल्स, ओल्ड रिकॉर्ड्स विद स्क्रैचेस, द मिस्टीरियस साइलेंस ऑफ द लिसनर एंड हिज घेस्टली लॉन्ग आर्म्स फिट द एटमोसफियर ऑफ द डिकेइंग ओल्ड दिल्ली। तो ये बताई गई है, ये बताया है बाबा के, जो कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसके बारे में ये कुछ लाइंस बोली हैं सैयद अमानुद्दीन ने। ठीक है, Baba refuses to change his old HMV gramophone with the latest hi-fi system that Raja gets him as a gift. When Tara tells him that she tried looking for new records for Baba while she was abroad, but was unable to find 70s anymore, Bim says, "Oh, he doesn't want any new records. He wouldn't play them. He loves his old ones." क्योंकि वो इसलिए वो पुराने को पसंद करता है ना, क्योंकि वो डेवलप नहीं हो रहा ना उसका माइंड, इसलिए वो 78 के नहीं, वो 40s के ही सुनेगा, पुराने ही सुनेगा। As an autistic person, Baba is pushed to the margins of society. The HMV gramophone becomes a weapon of some sort in his hands. Although he is silent, he controls sound through music. This is effectively brought out by Desai in the opening scene of the novel. The cacophony means noise, that heralds, that starts Baba's entrance, takes over the atmosphere of the house. क्योंकि क्या है ना, उसका कोई कंट्रोल नहीं है बाबा का उस घर पे, लेकिन वो किस तरह से उस घर को कंट्रोल कर रहा है, कि किस तरह से कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो म्यूज़िक बजा रहा है। तो उससे जो नॉइस आ रही है ना, उससे उसको लग रहा है कि हाँ, मेरी प्रेजेंस इस घर में है किसी तरह से। ठीक है, इस तरह का बोलने का मतलब है इनका। तारा इवन वॉन्डर्स वाई डिड ही स्पेंड हिज डेज एंड ईयर्स लिसनिंग टू दिस अपीलिंग नॉइस
तारा को बड़ा अजूबा लगता है कि वाई वो क्यों ये इस तरह के साउंड सुन रहा है ना, इस तरह की म्यूज़िक सुन रहा है ना. The music coming out of the old HMV gramophone, which belongs to Ali's daughter, Benazir, becomes a voice from the past. When Raja is asked by Ali, who shifted to Hyderabad during the partition riots, to look into his house, he requests Bim to do him the favor since he was not well. अली ठीक नहीं थे, तो अली जो थे वो राजा को, अपने दामाद को बोलते हैं कि वो जो है वो मीन्स उनका जो घर है वहाँ पे दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में, उसको जाके देखे. क्योंकि राजा जो है, इसमें बताया ना, व्हेन राजा इज़ आस्क्ड बाय अली हु शिफ्ट टू हैदराबाद ड्यूरिंग द पार्टीशन राइट्स, मीन्स जो राजा है वो हैदराबाद शिफ्ट हो गया था पार्टीशन राइट्स के बाद. तो वो जो उनका घर था, अली का जो घर था, वो अली साहब का जो घर था वो अबंडेंट था, वहाँ कोई नहीं रहता था ओल्ड दिल्ली में. तो अली ने राजा को बोला कि उस घर की देखभाल कौन कर रहा है. तो राजा ने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम जाओ, उसे फेवर लिया और उसको बोला कि तुम जाओ और उस घर को देखो. Bim agrees and takes Baba with her. Inside the house, Baba is very quiet, but once he spots the gramophone, he begins to respond differently. जैसे वो ग्रामोफोन देखता है ना, तो वो बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देता है. सो इसमें बताया गया है कि बाबा हैड बीन साइलेंट ऑल थ्रू दिस टूर, घोस्टली टूर, क्योंकि घर खाली होता है ना, तो वो घोस्टली घर लगता है. कीपिंग close to her, except when she made some small nervous comments, when he gave start and jumped away from her. Now he pointed his finger and made a little desperate sound like a bell that won't ring when pressed. Bim looked. What? She asked. That, Baba nodded, and she went with him to a corner where an old-fashioned, his master's voice gramophone stood on a small three-legged table, on the lower shelf of which was stacked the records Benazir and her friends had listened to. Come, let's go, said Bim. Turn away. Let's go and look into the servants' quarters. There may be someone there. But Baba wouldn't go. He stood there, fingering the smooth, shining metal box in the green gadgetry in the green box. His long fingers closing about the curved silver iron horn. Sorry. Lovingly. Come, Baba, come, Bim said several times, more and more impatiently, but he was smiling to himself, quite deaf and unresponsive in the enclosed bubble of his dream, till she said angrily, Then I am going alone. Whereupon he reluctantly let down the lid, closing the box with a gentle creak, and followed her, dragging his foot and looking wept, so that she said angrily, If you want it, I suppose there is nothing to stop you taking it. But first, let's go and see if there is anyone outside at the back whom we can ask. He raised his chin and gave her a shy, fearful look of hope, then and followed her more willingly. है ना, उसने मना लिया मतलब बिम को कि वो वहाँ से उसको ले जाएगा ग्रामोफोन को. In this episode we notice Baba communicating with Bim. Otherwise, throughout the novel, he is engrossed in his own world and doesn't communicate with anyone. Baba's routine life is represented through the circular movement of the gramophone. Dr. Viswas is also defined by the music he loves. He is the doctor that Mr. Das firm sends to treat Raja and later Miramasi. Dr. Viswas was initiated into Western classical music in Germany. He learnt the violin there. He tells Bim during a concert that he takes her to. When I first heard Mozart
मिस दास, तो वो बोलता है कि व्हेन आई फर्स्ट हर्ड मोजार्ट, मिस दास से वो बात कर रहा है, बिम से बात कर रहा है, आई क्लोज माई आईज एंड इट वॉज एज इफ माई होल पास्ट वेनिश्ड, जस्ट रोल्ड अवे फ्रॉम मी, द कंट्री ऑफ माई बर्थ, माई एंसेस्टर्स, माई फैमिली, everything, and I arrived in a new world. It was a new world, a shining new world. I felt that when I heard Mozart for the first time. But when he returned to India, he can't relate to his violin. He tells Bim, I had so much there, I was so rich then, now I feel very poor, useless. I touch my violin and try to make sounds to remind me of that time. I take lessons from the first violinist of the Delhi Music Society Orchestra, and I play to myself and my impose my playing on my mother, who is an old-fashioned Bengali lady and likes only Tagore's songs and suffers in silence because she loves me. आई एम हर ओनली सन, मतलब वो मेरी बात सुनती हैं, मेरी उनको तो टैगोर के सॉन्ग पसंद है, लेकिन वो मेरा वायलिन सुनती थी, और मदर हैं इसलिए वो मुझे प्यार करती हैं, इसलिए वो मेरे वायलिन को सुनती थी जब मैं बजाता था. देसाई weaves in the strain of Desai, Anita Desai weaves in the strain of neo-colonialism, which runs as a reality in post-independent India. अभी जो है ना नियो कॉलोनियलिज्म की भी बात आ रही है. सो द ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर ब्रॉट बाय colonialism is beautifully depicted by her through music. ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर को भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है. विश्वास लव्स वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड हिज मदर लव्स रविंद्र संगीत. Similarly, in Das household, we hear Western songs, and in their neighbors, Ali's and Mishra, we hear Indian classical music. मतलब आफ्टर अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो कॉलोनियलिज्म तो था उनसे पहले, लेकिन नियो कॉलोनियलिज्म किसको बताया गया है, अंग्रेज़ जो छोड़ कर गए थे ना अपनी कल्चर को, उसको ये नाम दिया गया है. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा था, उन पे लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था अंग्रेज़ों का. तो कुछ लोग वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद करते थे, और जो पुराने लोग थे वो रविंद्र संगीत और वेस्टर्न जो है वो दास हाउस होल्ड जो है वेस्टर्न सॉन्ग्स पसंद करता था, और जो मिश्राज हैं वो अलीज एंड मिश्राज जो हैं वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते थे. तो अंग्रेज़ों का प्रभाव जो था वो दास फैमिली पर ज़्यादा था, और इसमें डॉक्टर विश्वास पे भी ज़्यादा था. For the Mishras too, music is important. It is for them both a source of entertainment and livelihood. The two Mishra sisters, Sarla and Jia, after being abandoned by their husbands, earn their living by teaching singing and dancing to little girls. To the Mishra boys, we have also been abandoned, who have also been abandoned by their wives. Music becomes a hobby and interest. When Mulk comes to know of the fact that his sisters prevented the tabla player, harmonium player from coming for a musical evening because of the expense involved, he is furious. जब मुल्क मिश्रा को पता चलता है ना कि उनकी सिस्टर्स ने हारमोनियम प्लेयर या तबला प्लेयर को अपने घर नहीं आने दिया इसलिए कि ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा उनका, तो वो बहुत गुस्सा हो गया. तो वो बोलता है, फूड, इट वॉज नॉट फूड दे वॉन्टेड, you are insulting them, you are insulting my guru. He doesn't want food or money, he wants respect and regard. That is what we must pay to guru, but you have no respect, no regard. You think only of money, money. That is what you think about you too. They have minds full of money, dirty minds. They don't understand the artist, how the artist lives for his art. They don't know how it is only music here. He clasped his chest with a moist, sweating paw. Only music that keeps me alive, not food, not money. The main theme of the novel is brought out most effectively in the last scene when Mulk Mishra and his aging guru
at a concert at a musical evening. The Das are invited to the evening. However, only Bim and Baba attended because Tara and her family have gone to Hyderabad to attend the wedding of Moina, Raja's daughter. At the musical evening, Bim notices the fact that though Mulk and his guru both hail from the same school of singing, the contrast between Mulk's voice and his was great, whereas Mulk's voice had been almost like a child's, so sweet and clear, or a young man's full and ripe, and with a touch of sweetness to it. The old man's was sharp, even a little cracked, inclined to break, although not merely with age, but with the bitterness of his experiences, the sadness and passion and frustration. Bim realizes that between the young and the old, the past and the present, the audience and the singers, all from an integrated whole, all form an integrated whole. ओके नाउ थोड़ा सा इसमें है एड एज संतोष गुप्ता ऑब्जर्व्स, ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, कोटेशन नहीं ये पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ते हैं. म्यूजिक संतोष गुप्ता बोलते हैं कि म्यूजिक बिकम्स सिम्बॉलिक ऑफ द इंट्यूटिव मीन्स इनबॉर्न या इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड ऑफ द रियलिटी दैट लाइज सबमर्ज्ड अंडर अपीयरेंसेस. म्यूजिक जो है ना वो जो अंदर रियलिटी छुपी हुई है उसको बता रहा है. With the inner eyes, Bim perceives the continuity of history, hers, her family's, and in time, not binding them within some dead and airless cell, but giving them the soil in which to hand down their roots, reach out to new lines, but always drawing from the same soil, the same secret darkness. Bim perceives this hidden source of her being. It was where her deepest self lived, and the deeper selves of her sister and brother. The harmonious relationship between the old guru and Mulk also establishes the possibility of a meaningful interaction between past and present, old and youth. The song brings also a synthesis of poetry and melody, verbal and non-verbal, rational and emotional, moods of artistic expressions. Guru sings a verse of Iqbal to which both Bim and Baba respond, feeling close to each other. The last scene becomes the image of Bim's reintegration, improvement in relationship with her family, society and culture, and her perception of a unity between divergent elements within herself and in the world.